यस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सो हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का AS7 कर लिया था, वो स्पेशल बिजनेस है इसलिए उसका स्पेशल स्टैंडर्ड है, करेक्ट। बट अभी बाकी के बिजनेसेस के लिए हमें AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का गाइडेंस लेना है टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। एक मिनट में ग्रुप में शेयर कर देती हूं लिंक। चलो, सो ये बहुत ही इजी स्टैंडर्ड है, इसमें आपको कीवर्ड्स बहुत ही रिकॉल करने हैं। तो आज आपको बहुत सारा अंडरलाइनिंग करना है क्योंकि आपके आंसर में क्या क्या कीवर्ड्स आने चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूं। एक बार आवाज चेक कर लेती हूँ, आवाज चेक करते हैं। हेलो, कीवर्ड्स आने चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, चलो, यस। सो रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स हम देखने वाले हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड द यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड। सो एंटरप्राइज रिसोर्सेज मतलब क्या? कैश, पैसे अगर दूसरे ने यूज किए हमारे पैसे, मतलब क्या? हम पैसे देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, करेक्ट। सो उसको क्या बोलना है? यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेस, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सो अनसर्टेनिटीज, अल्टीमेट कलेक्शन, कस्टमर से कलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी जो अनसर्टेनिटी है उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे क्या इफेक्ट होने वाला है वो देखने वाले हैं। चलो, एंड रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर। सो revenue also called the top line or sales is the backbone for any business. So a higher the revenue would normally reflect an increase in market share, higher prospects and eventually an increased value of the business. So you would notice that many startup entities are more focused to increase their market penetration and revenue without initially focusing on profitability. So maximum revenue increase करना, sales increase करना, ये objective रहेगा, correct? As a result, it is crucial to have a standard that addresses how entities must recognize the revenue with respect to the amount and timing. कितना amount का revenue recognize करना है and timing in a particular accounting period. Timing मतलब at what time? As AS9 deals with the basis for recognition of revenue in the statement of profit and loss of an enterprise, AS9 is mandatory for all enterprises. So the standard is concerned with the recognition of revenue. ये अभी देखा हमने, arising in the course of ordinary activities of the enterprise from sale of goods, rendering of services and use by others of enterprise resources yielding interest,
royalties and dividend. So AS9 does not deal with the following aspects of revenue recognition. इसके लिए रिलेटेड नहीं है AS9. रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर AS7 लग जाता है ना. रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम हायर परचेस लीज एग्रीमेंट्स, AS19 आता है इधर. फिर रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अदर सिमिलर सब्सिडीज, AS12 आता है. एंड रेवेन्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनी अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके लिए स्पेशल गाइडेंस दिया हुआ है. एग्जाम्पल्स ऑफ आइटम्स not included within the definition of revenue for the purpose of AS9. So realized gains resulting from disposal of and unrealized gains resulting from the holding of non-current asset. Example, appreciation in the value of fixed assets, मतलब increase in the value of fixed assets. आपको पता है कि लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है, सो देयर इज एप्रिसिएशन, बट वो अनरियलाइज्ड गेन है. रियलाइज कब होगा? जब आप लैंड सेल करोगे तब. सो वो अनरियलाइज्ड गेन या रियलाइज्ड गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, डिस्पोजल ऑफ द एसेट, वो रेवेन्यू में आता नहीं है. अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स and the natural increase in herds and agricultural and forest products, वो भी revenue में नहीं आता. Realized or unrealized gains resulting from changes in foreign exchange rates and adjustments arising on the translation of foreign currency financial statements, तो वो भी AS में 9 में नहीं, कब मतलब वो रेवेन्यू नहीं है बेसिकली. Realized gains resulting from the discharge of an obligation at less than its carrying amount, so discount received basically. Realized gain resulting from discharge of obligation. Discharge of obligation, discharge करना मतलब पेमेंट करना, obligations का मतलब liabilities का पेमेंट करते वक्त आपको लेस देन कैरिंग अमाउंट पेमेंट करना पड़ा. जो भी अमाउंट दिया है, बुक वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उससे कम अमाउंट आपने पे किया, तो वो क्या हुआ आपके लिए? डिस्काउंट रिसीव हुआ. तो वो डिस्काउंट भी रेवेन्यू का पार्ट नहीं है. एंड अनरियलाइज गेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द रीस्टेटमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन. सो डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू देखो, इंपॉर्टेंट है. रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स एंड अदर कंसिडरेशन arising in the course of ordinary activities of an enterprise, from the sale of goods, from the rendering of services, and from the use by others of enterprise resources, yielding interest, royalties and dividends. So वही चार्ट में नीचे दिया है. रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, rendering of services or use by others of enterprise resources, yielding interest, royalties and dividend. So example देखो, entity XY sell a machine being used at its factory at a price of rupees 2 lakh. Okay, entity XY ने क्या किया है? सेल किया है. क्या सेल किया है बताओ? मशीन जो उनके फैक्ट्री में यूज हो रहा था, एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 2 lakhs. द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन इज 1.80 lakhs. द सेल ऑफ द मशीन डज नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ XY but is an example of capital receipt since transaction does not take place in the normal course of business. So such gain on sale, that is 20,000 का गेन हुआ है, is recognized as a part of profit and loss statement under gain or loss on disposal of assets. So ये revenue consider नहीं होता है. It is a capital receipt, करेक्ट. एंड इससे जो गेन आएगा और लॉस होगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, बट इट इज नॉट रेवेन्यू, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एज पर AS9. दूसरा एग्जाम्पल देखो, ST लिमिटेड इज अ रियल इस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर. इट इज इनटू द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज. In 2001, ST Limited purchased a unit of land for rupees 150 crore
It sold off that land after few months at a price of 240 crore. So in the above case, the sale of land is a transaction that happens in the ordinary course of business, as he is real estate developer and builder. Properties will be an item of inventory in the financial statements for ST Limited, and hence it should recognize revenue of 240 crore when the land is sold. So second case में क्या हो रहा है, ST Limited रियल इस्टेट डेवलपर है एंड बिल्डर है, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज का परचेस सेल क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, करे प्रॉपर्टीज उसके लिए इन्वेंट्री है. सो प्रॉपर्टीज का अगर सेल हुआ 240 करोड़ का सेल हुआ तो उसको क्या दिखाना है, उसको रेवेन्यू ट्रीट करना है, करे सेल ट्रीट करना है उसको. नाउ एग्जांपल 3 देखो. DL Limited, a pharma company, has been conducting research on new medicine since last 2 years to increase the immunity levels of the people consuming it without any side effects. ऐसा वो research कर रही थी एक medicine. During the current year, it decides to sell the outcome of the research undertaken so far टू अनदर कॉम्पिटिटर. डीएल ने क्या किया, वो रिसर्च का जो भी आउटकम आया था वो एक उसके कॉम्पिटिटर को सेल कर दिया. जीएच लिमिटेड टू अनदर कॉम्पिटिटर जीएच लिमिटेड फॉर ₹50 crore. डीएल हैज ऑलरेडी incurred 30 crore on the ongoing research. In the above example, the sale of research findings does not represent an increase in revenue. It is because DL Limited's business is not to sell these research findings in the ordinary course of business. The amount of 50 crore will be a part of other income in the profit and loss account. So वो अगर आपका ordinary course of business है और उसमें आप सेल करते हो तो ही उसको रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा. ठीक है. सो रेवेन्यू मतलब क्या समझ में आ गया. अभी एजेंसी रिलेशनशिप. सो एजेंसी रिलेशनशिप में क्या होगा, रेवेन्यू सिर्फ क्या आएगा, करेक्ट कमीशन. एजेंट के लिए कमीशन उसका रेवेन्यू रहेगा ना. सो इन एजेंसी रिलेशनशिप द रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ commission and not the gross inflow of cash, receivables and other consideration. The criteria of principal agency relationship is significant to understand how much revenue can be recognized by entity for sale transaction. The key principle is whether the sale transaction is made by an entity on its own or on behalf of someone else. सो आप दूसरे के लिए सेल कर रहे हो तो आप कौन हो, एजेंट हो, फिर आपका रेवेन्यू क्या रहेगा, कमीशन. वेदर द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स पर्टेनिंग टू द गुड्स और सर्विसेज आर विद द एंटिटी और विद समवन एल्स वुड डिटरमाइन द सेलर्स कैपेसिटी एज प्रिंसिपल और एजेंसी. When another party is involved in providing goods or services to a customer, the entity shall determine whether it has an obligation to sell or provide the specified goods or services itself. That is, the entity is a principal, or to arrange those goods or services to be sold or provided by other party. That is, the entity is an agent. So वो देखना है कि हम अगर खुद प्रिंसिपल है तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, सेल रिकॉग्नाइज करेंगे. बट अगर हम एजेंट है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, यस कमीशन रिकॉर्ड करेंगे. क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करते हैं. हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज बाय रेस्टोरेंट्स एंड हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज बाय जिगैटो फॉर द ईयर. ओके, हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज बाय रेस्टोरेंट्स एंड हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज बाय जिगैटो फॉर द ईयर. सो देखते हैं
Zigato runs a food delivery business. ओके मतलब जोमैटो से ये नाम किया होगा शायद. As per the arrangement, Zigato allows customers to order from local restaurants and is responsible for the delivery of the food within the stipulated time. During a particular year, it collects the money on orders made online as under. During a particular year, it collects the money on order made online as under. So total price for food items 200 lakhs, delivery charges 60 lakhs, GST 40 lakhs and total 300 lakhs. So Zigato has received 300 lakhs from the above orders, 300 lakhs for the above orders from customers, and the orders were delivered to the customer in its stipulated time. ओके सो देखो 300 lakhs जो कलेक्ट हुआ है उसमें से डिलीवरी चार्जेस का जाएगा जिगाटो को, ये तो जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा एंड ये जाएगा रेस्टोरेंट को. ओके फूड की प्राइस जाएगी रेस्टोरेंट को, करेक्ट. डिलीवरी चार्जेस जाएंगे वो जिगाटो के और जीएसटी जाएगा गवर्नमेंट को. सो द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद द फूड आइटम्स आर नॉट विद जिगाटो. रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद फूड आइटम्स are not with Zigato. When a customer has ordered a food item, whether the item will be prepared or not is the responsibility of restaurant and not Zigato. Similarly, the responsibility to deliver the food item is with Zigato and the restaurant does not undertake the responsibility for the same. So therefore the restaurant undertakes the principal responsibility to prepare the food and ensure its quality, and Zigato on the other hand is only responsible to deliver the food. So the Zigato is acting as an agent, hence it can only recognize the revenue relating to that activity which it does in the ordinary course of business. The revenue for Zigato is 60 lakhs, whereas the revenue for restaurants will be 200 lakhs. It may be noted that the GST of 40 lakhs is the liability payable to government, third party. Hence, it does not form the part of the revenue. Okay, so easy था ये question. Okay, एक बार रिवाइज करो कैसे कैसे लिखना है. नोटबुक में सॉल्व करना है इसको. पॉज करके सॉल्व करो ये. अभी एग्जाम्पल 4 देखो. TripDeal is a website that allows people to book airline tickets. As a part of the business, it agrees to buy 100 tickets from an airline on a particular date and resells those tickets to customers. However, TripDeal bears the loss for any unsold tickets. So यहाँ पर रिस्क कहाँ पर गई है? करेक्ट, ट्रिपडील ने रिस्क ली है ये. सो इन द अबव एग्जाम्पल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटिंग टू टिकट्स आर बोर्न बाय ट्रिपडील. Hence, sales made for the tickets will be fully recognized as part of its revenue. Sales made for tickets वो revenue treat करना है TripDeal का. Any unsold tickets will be charged as loss by the entity. Okay, जो unsold tickets है वो क्या हो गया फिर
लॉस हो गया ट्रिप डील का. Okay, now sale of goods. Revenue from sale transaction should be recognized when the requirements as to performance set out in below in para 2.5. Okay, timing of recognition of revenue from sale of goods are satisfied, provided that at the time of performance it is not unreasonable. It is not unreasonable मतलब ही it is reasonable, but लिखते वक्त कैसे लिखना है? It is not unreasonable to expect ultimate collection if at the time of raising of any claim it is unreasonable to expect ultimate collection, revenue recognition should be postponed. Okay, ultimate collection का जो reasonable अल्टीमेट कलेक्शन रीजनेबल नहीं है तो आपको क्या करना है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन करना है. एंड इफ इट्स रीजनेबल दैट देयर विल बी अल्टीमेट कलेक्शन रीजनेबल टू बिलीव, देन आपको रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड करना है. सो इलस्ट्रेशन 2 देखो, एक्सप्लेन हाउ द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू बी डन बाय AB लिमिटेड. So AB sells goods to CD on 1st March 2001. CD is having significant cash flow issues since last few months. However, it is trying to raise funding through bank loan to be able to run its operations in the future. On 5th May 2001, CD is able to seek the funding and is expected to be able to pay for the goods in future. So at the time of sale it is difficult for AB to ascertain whether it will be able to collect the amount from CD due to poor information, due to poor financial conditions. So अगर certain नहीं है AB at the time of sale तो उसको sale नहीं treat करना चाहिए. Correct? Okay, so in the above case AB should not recognize any revenue on 1st March and until that uncertainty of the recovery is clear. Hence the revenue can only be recognized by AB on 5th of May 2001. 5th of May को ही हम recognize कर सकते हैं revenue. The inventory transferred to CD until that date is required to be shown as its own inventory. Okay, so जब तक सेल नहीं होता है तब तक उसको खुद की ओन इन्वेंट्री ट्रीट करनी है. ओके, ये लिखो आंसर्स इसके इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 के. एक 5 मिनट ब्रेक लेते हैं एंड देन कंप्लीट करते हैं आगे के प्रोविजंस.
चलो, सो ब्रेक के बाद अभी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ टाइमिंग का। सो यहाँ के कीवर्ड्स आपको लर्न करने हैं क्योंकि ये आंसर में लिखना है हाँ हमें। सो टाइमिंग of recognition of revenue from sale of goods. So in a transaction involving the sale of goods, performance should be regarded as being achieved when the following conditions have been fulfilled. So first, the seller of goods has transferred to the buyer the property in the goods for a price. तो performance complete हो गया, ऐसे हम ट्रीट करेंगे। परफॉर्मेंस शुड बी रिगार्डेड एज बीइंग अचीव्ड। कब परफॉर्मेंस अचीव हुआ? व्हेन द सेलर ऑफ द गुड्स हैज ट्रांसफर्ड टू द बायर द प्रॉपर्टी in the goods for a price, or all significant risk and rewards of ownership has been transferred to the buyer and the seller retains no effective control of the goods transferred to the degree usually associated with the ownership. So सारे significant risk and rewards जो है ownership related वो transfer हो चुके हैं to the buyer and seller के पास कुछ भी control नहीं है. Seller has retains no effective control of the goods transferred to the degree usually associated with the ownership. And है हाँ, ये either और था, either property is transferred or all significant risk and rewards of ownership transfer, and no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration that will be derived from the sale of the goods. No significant uncertainty exists regarding the amount of consideration that will be derived from the sale of the goods. So no significant uncertainty. यहाँ पर आपको निगेटिव में सेंटेंस लिखना पड़ेगा. No significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration that will be derived from the sale of the goods. मतलब जो भी अमाउंट का कलेक्शन है उसके रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी नहीं है, मतलब भी सर्टेनिटी है. ओके, सो इलस्ट्रेशन 3 देखो. Explain how the recognition of revenue be done by AB for the year ended 31st March 2001. So AB sells goods to CD on 1st Jan 2001 for 2 lakhs. After the sale was made, CD is having significant cash flow issues and it is trying to raise funding through bank loan to be able to run its operations in future. However, it is unable to do so and he has gone under liquidation on 15th March 2001. At the time of sale, there was no reason for AB to believe that it will not be able to collect the amount from CD in future. So, at the time of sale, कुछ भी नहीं पता था, करेक्ट, अबाउट द कलेक्टेबिलिटी, तो तब हम उसको सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो देखो, इन द अबाउ केस, at the time of sale, it was not unreasonable for AB to expect ultimate correction from CD. Therefore, AB should recognize the revenue of rupees 2 lakhs on 1st Jan 2001 and recognize. Oh, एक मिनट, हाँ ये फ्रीज हो गया क्या? कुछ नहीं, मैंने अंडरलाइनिंग किया है सिर्फ. सो एंड रिकॉग्नाइज अ रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट. सो हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट.
उसका कलेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं. लेटर सिंस CD went into liquidation, AB should write off the receivable and book a loss in his books. मतलब बैड डेट्स रिकॉर्ड करना है. Later, since CD went into liquidation, AB should write off the receivables and book a loss in his books. So accounting देखो कैसे होगा in the books of AB. First CD account debit to revenue account 2 lakh, ये होगा 1 Jan को. एंड जब वो लिक्विडेशन में गया 15 मार्च को, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू CD अकाउंट. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू CD अकाउंट 2 लाख. ओके, ये हुआ सेल ऑफ गुड्स का. अभी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज देखो. रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ट्रांजैक्शन इज यूजुअली रिकॉग्नाइज एज द सर्विसेज परफॉर्म. जब सर्विस परफॉर्म हो जाएगा तब आप रेवेन्यू उसका रिकॉग्नाइज कर सकते हो. सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ट्रांजैक्शन. कौन से 2 मेथड्स है देखो. proportionate completion method and completed service contract method. So proportionate completion method देखो is a method of accounting which recognizes revenue in the statement of profit and loss proportionately. नाम में ही है ना उसके, proportionate completion method. ये हमने कहाँ पर देखा था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा था ना S7 में. So in the statement of profit and loss proportionately with the degree of completion of services. जितना जितना complete हो जाएगा उतना उतना revenue आप record करेंगे with a degree of completion of service under a contract. Hence performance consists of the execution of more than one act. जिस कॉन्ट्रैक्ट में मोर देन वन एक्ट आपको मोर देन वन एक्ट प्ले करना है, मतलब बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, तब ये मेथड यूज होती है. रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज प्रोपोर्शनेटली बाय रेफरेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एक्ट. एंड कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली व्हेन the rendering of service under a contract is completed or substantially completed. And in this method performance consists of execution of a single act. Example, installation of a machine, repair service. Okay, यहाँ पर performance of एक ही act है. Alternatively services are performed in more than a single act and the services yet to be performed are so significant in relation to the transaction taken that performance cannot be deemed to have been completed until the execution of those acts. So the completed service contract method is relevant to these patterns of performance, and accordingly revenue is recognized when the sole or final act takes place and the service becomes chargeable. Okay, revenue from sales or service transaction should be recognized when the service is performed, provided at the time of performance it is not unreasonable to expect ultimate collection. वो second condition है ही, हाँ, it is not unreasonable to expect ultimate collection. If at the time of raising any claim it is unreasonable to expect ultimate collection, revenue recognition should be postponed. Okay, and now last, income from other sources like interest, royalties and dividends. So first देखो interest, it is charges for the use of cash resources or amounts due to the enterprise. Revenue is recognized on a time proportion basis. Underline करो, on a time proportion basis, taking into account the amount outstanding and the rate applicable. Okay, amount outstanding and rate applicable दोनों को consider करके interest की amount निकालेंगे. Royalties charges for the use
of such assets as know-how, patents, trademarks, and copyrights, and revenue is recognized on accrual basis in accordance with the terms of relevant agreement. ओके, रॉयल्टी इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, लिखो वहां पर ऑन एक्रूअल बेसिस, लिखो नहीं, हाईलाइट करो. एंड डिविडेंड्स, रिवॉर्ड्स फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. So revenue is recognized when the owner's right to receive the payment is established. Owner's right to receive the payment is established. ओके, सो तीनों के जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के क्राइटेरिया है वो लर्न करो. हाँ, रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम द यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड. ये है ई कंडीशन व्हेन नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एज टू मेजरेबिलिटी और कलेक्टेबिलिटी एग्जिस्ट. Illustration 4. Whether the above treatment is as per the relevant accounting standard. During the year ended 31st March 2001, ZX Enterprises has recognized 100 lakhs on accrual basis income from dividend on units of mutual funds held by it. अरे बाप रे. The dividend on mutual funds were declared on 15 June. And the dividend was proposed on 10th April 2001. So declare 15 जून को हुआ था, करेक्ट, एंड प्रपोज कब हुआ था डिविडेंड? 10th अप्रैल को. तो वो लास्ट मार्च में ही कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मार्च में 100 लाख का उन्होंने रिकॉर्ड किया ऑन अक्रूअल बेसिस, क्योंकि वो रिसीवेबल है, अक्रूड है. तो ये ट्रीटमेंट रॉन्ग है. Dividend from investment in shares are not recognized in the statement of profit and loss until a right to receive payment is established. So ये sentence आपको लिखना है. Right to receive payment is established. In the given situation, the dividend is proposed on 10th April 2001 while it is declared on 15th June 2001. Thus the right to receive the payment for payment of dividend gets established on 15th June 2001. The recognition of 100 lakhs on accrual basis in the financial year 2000-2001 is not correct as per AS 9 revenue recognition. सो पॉज करो वीडियो को, ये देख के लिखोगे आंसर्स. ओके, थ्योरी में भी आप लिखोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो ही आप आंसर लिख पाओगे. ओके, सो आंसर लिखो ये. नाउ इलस्ट्रेशन 5. You are required to state whether and on what basis these revenues can be recognized by X Limited. Y Limited used certain resources of X Limited and in return X Limited received 10 lakhs and 15 lakhs as interest and royalties respectively. Okay, received हो चुके हैं. हाँ, in return X Limited received 10 lakh and 15 lakh as interest and royalties respectively from Y Limited, and during the year 2001-2 you are required to state. So as per AS 9 on ओके, चलो. सो एज पर AS 9 ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये पूरा लिखना है. रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट,
royalty should only be recognized when no significant uncertainty exists. As to no significant uncertainty as to measurability and collectability exists. These revenues are recognized on following basis: interest on a time proportion basis, taking into account the amount outstanding and rate applicable. Therefore, X Limited should recognize interest revenue of 10 lakhs. Royalties on accrual basis in accordance with the terms of the relevant agreement. X Limited therefore should recognize royalty revenue of rupees 15 lakhs. Now conditions for sale of goods. First देखो, delivery is delayed at buyer's request and buyer takes title and accepts billing. So sometimes the buyer may purchase goods and request the seller to hold the goods on his behalf for some reason, for example due to lack of storage or transportation delays hai. So in such cases the risk and rewards associated with the ownership seems to have been transferred to the buyer and the sale should be considered as complete. So this is true even if the physical possession of the goods is with the seller. So the conditions to be made to account for the sale are: the goods must be specifically identified and cannot be transferred to another customer. The delivery is delayed at the buyer's request and the goods are ready to be delivered to the buyer. So example देखो, XY Limited sells goods worth rupees 50 lakhs on 28th February 2001 to AB Limited. And AB Limited is facing storage capacity constraints at their warehouse. So AB Limited instructs XY Limited to hold the goods at XY Limited's warehouse and arrange for delivery on 15th March. However, all the risk and rewards associated with the sold goods are deemed transferred to AB. Okay. So in the current scenario, delivery of goods sold is delayed at the request of the buyer, correct? XY Limited can recognize revenue for the sale of goods to AB on 20 February. उसी दिन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, provided that the goods sold to AB Limited are held in XY Limited's warehouse separately. Okay, and are not clubbed with other inventory. So आपको ये ऐसे लिखना है. So delivery ये delay हुई है at the request of the buyer and XY Limited can recognize revenue from sale of the goods to AB on 20th February. Provided that the goods sold to AB Limited are held in XY Limited's warehouse separately रखा हुआ है and not clubbed with other inventory. अभी नेक्स्ट है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस. सेल ऑन अप्रूवल बेसिस. सो रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड until the goods have been formally accepted by the buyer or the buyer has done an act adopting the transaction or the time period for rejection has elapsed or where no time has been fixed, a reasonable time has elapsed. So ये तीन केसेस है, तभी हम इसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, सेल ट्रीट कर सकते हैं. Revenue should not be recognized until the goods have been formally accepted. ये first, formally accepted by the buyer. Second is, or the buyer has done an act adopting the transaction. And third,
the time period for rejection has elapsed, or where time period where no time has been fixed, a reasonable time has elapsed. Example देखो 6. Messrs XY sell goods worth rupees 5 lakh on 30th March 2001 to Messrs FT under sale on approval basis. Under the arrangement, FT can return the goods back to XY within next 3 months. XY cannot reasonably determine whether FT will give the acceptance of goods before the expiry of 3 months. So under these circumstances, XY cannot recognize revenue until the goods are accepted by FT or on completion of 3 months, whichever is earlier. एक मिनट, हाँ, आवाज को क्या हुआ है चेक करती हूँ. हाँ, आ रहा है, ठीक है. ओके, सो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस XY cannot recognize a revenue until the goods are accepted by FT or on completion of 3 months, whichever is earlier. Okay, now goods sold subject to inspection or installation. In case the installation is complex and it's significant to be able to use the goods in the intended manner, then revenue should not be recognized until the installation is satisfactorily completed. कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन है तो जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होता है तब तक हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. However, in case the installation is simple, for example, a refrigerator needs to be plugged to a power connection after the delivery to customer's place. So in that case, revenue is recognized when the customer has agreed to purchase the goods. So कस्टमर ने एग्री करने के बाद ही हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अगर इंस्टॉलेशन सिंपल है तो. सेल और सेल एंड रीपर्चेस एग्रीमेंट. So such arrangements, sale and repurchase arrangement. So sale and such arrangements are considered to be financing arrangement and no sale can be recognized. इसको फाइनेंसिंग अरेंजमेंट ही ट्रीट किया जाता है, इसको सेल नहीं ट्रीट करते, क्योंकि सेल करके हम उसको रीपर्चेस कर रहे हैं ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एज गुड एज लोन ले रहे हैं. So such arrangements are considered to be financing arrangements and no sale can be recognized. Instead, a borrowing should be recognized in the books of the seller. Okay, seller के बुक्स में उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? Yes, उसको borrowing ट्रीट किया जाएगा. So on 1st Jan 2001, Messrs KJ sells goods at a invoice value of rupees 5 lakhs. To TH, to Messrs TH, and at the time of sale, Messrs KJ has agreed to repurchase the goods back from Messrs TH on 31st March at a price of rupees 6 lakh. You are required to do the accounting for the above transactions in the books of Messrs KJ. So KJ ने पहले goods sale किए, देखो कब 1st Jan को,
इनवॉइस वैल्यू कितनी है बताओ? करेक्ट, 5 लाख की. एंड एट द टाइम ऑफ सेल मेसर्स केजे हैज एग्रीड टू रीपर्चेस द गुड्स. ओके, तब कब परचेस की है? ऑन 31st मार्च एट अ प्राइस ऑफ 6 lakhs. ओके, सो 3 महीने के लिए हमें वो 5 लाख मिल गए ना यूज करने के लिए, और हमने परचेस भी किया उसको 31st मार्च को. सो फिर से हमें वो प्रोडक्ट भी मिल गया, वो गुड्स भी मिल गए. सो पहले हम ट्रीट करेंगे उसको 1 Jan को बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मेसर्स TH 5 लाख का. देन हमने पेमेंट किया इंटरेस्ट का ऑन 31st मार्च, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मेसर्स TH 1 लाख एंड देन लोन टू बैंक. ओके, देन ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना है? करेक्ट, ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट्स गिवन शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम डिटरमाइनिंग रेवेन्यू. कैश डिस्काउंट का क्या करना है? सेपरेटली दिखाना है, वो डिडक्ट नहीं करना है. रेवेन्यू इज देयरफॉर रिकॉग्नाइज्ड एट ग्रॉस अमाउंट एंड कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस एज एंड व्हेन द सेलर रिसीव्स द पेमेंट नेट ऑफ डिस्काउंट. देन कंसाइनमेंट सेल पता है आपको, is a sale where delivery is made whereby the recipient undertakes to sell goods on behalf of consignor, मतलब agency relationship जैसे. So in such case revenue should not be recognized until the goods are sold to third party. So consignor goods देता है consignee को, okay, and then कंसाइनी आगे सेल करेगा कस्टमर्स को. सो जब तक कस्टमर्स को थर्ड पार्टी को सेल नहीं होते हैं गुड्स, तब तक हम उसको सेल ट्रीट नहीं कर सकते, रेवेन्यू ट्रीट नहीं कर सकते. सो इन द ईयर 2001-2 XYZ supplied goods on consignment basis to ABC, a retail outlet worth rupees 10 lakh. As per the terms, ABC will only pay XYZ for the goods which are sold by them to the third party. Rest of the goods can be returned back to the XYZ and ABC will not have any further liability for those goods. So during the year 2001-2 ABC has sold goods worth rupees 5,50,000 only, and rest of the goods are still lying in its store which may get sold in the next year. So advise XYZ Limited how much revenue it can recognize in the book for the period 2001-2. So XYZ ने किसको, XYZ ये कंसाइनर हुआ, एंड ये कंसाइनी हुआ. सो कंसाइनी ने जितने सेल किए हैं ना उतना ही रेवेन्यू आप दिखा सकते हैं. सो एज पर AS 9 कंसाइनमेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर ऑन जस्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड नो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी. देयरफॉर XYZ कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑफ रुपीज 5,50,000 ओनली. इतना ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ओके, सो स्टैंडर्ड यहां पर खत्म हो गया है. लास्ट एक पैराग्राफ है कि इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन. सो वेयर द एबिलिटी टू असेस द अल्टीमेट कलेक्शन विथ रीजनेबल सर्टेनिटी इज लैकिंग एट द टाइम ऑफ रेजिंग एनी क्लेम, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज postponed to the extent of uncertainty involved. When the uncertainty relating to collectability arises subsequent to the time of sale or the rendering of service, it is more appropriate to make a separate provision. मतलब बाद में अगर uncertainty आ गई तो क्या करते हैं? यस, उसको बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाते हैं. करें अ सेपरेट प्रोविजन टू रिफ्लेक्ट अनसर्टेनिटी रादर देन टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओरिजिनली रिकॉर्डेड. जो अमाउंट ओरिजिनली रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है उसको हम कुछ भी हाथ
नहीं लगाएंगे, बाद में अनसर्टेनिटी आई है तो हम उसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स दिखाते हैं. An essential criteria for the recognition of revenue is that consideration receivable for the sale of goods, the rendering of service or from the use by others of enterprise resources is reasonably determinable, and when such consideration is not determinable within the reasonable limits, the recognition of revenue is postponed. Yes, so revenue recognition में देखो summary, sale of goods when seller has transferred the property to the buyer for consideration or transfer of significant risk and rewards to the buyer. Then rendering of services में proportionate completion method, वहाँ पर performance consists of execution of more than one act and practically revenue is recognized on SLM basis. And completed service contract method, completed service method, generally performance consists of execution of a single act and revenue is recognized when the final act is completed and services are chargeable. इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड्स का पढ़ो आप. करेक्ट. इंटरेस्ट के लिए रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस. रॉयल्टीज के लिए रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड एग्रीमेंट, रॉयल्टी के लिए. एंड डिविडेंड के लिए रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन राइट टू रिसीव द पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड. ओके, इलस्ट्रेशन 6 देखो. The board of directors decided on 31st March 2002 to increase the sale price of certain items retrospectively from 1st Jan 2002. मतलब पीछे से क्या किया है उन्होंने, सेल प्राइस इंक्रीज किया है. इन व्यू ऑफ दिस प्राइस रिवीजन with effect from 1st Jan 2002, the company has to receive 15 lakhs from its customers in respect of sales made from 1st Jan to 31st March. Accountant cannot make up his mind whether to include 15 lakhs in the sale for the year 2001-2. तो advise करो. So price revision was effected during the current accounting period 2001-2. As a result, the company stands to receive 15 lakh from its customers in respect of sales made from 1st Jan to 31st March. तो ये सब facts लिखे हमने. अभी provision, if the company is able to assess ultimate collection with reasonable certainty, only then additional revenue arising out of the said price revision may be recognized in 2001-2. If the company is not reasonable, if the company is not reasonably certain on ultimate collection of rupees 15 lakhs from its customers in respect of sales made from 1st Jan to 31st March, it shall postpone recognition of revenue and disclose it in the financial statements for the year 2001-2 as per AS 1. ओके, सिर्फ डिस्क्लोज करना है. अगर इफ द कंपनी इज नॉट रीजनेबली सर्टन ऑन अल्टीमेट कलेक्शन, तो क्या करना है हमें, वो सेल पोस्टपोन करना है उसका रिकॉग्निशन. एंड करेक्ट, उसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है सिर्फ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Illustration 7.
7 देखो, अ क्लेम लॉन्च्ड विथ रेलवेज इन मार्च 2001, अ क्लेम लॉन्च्ड विथ रेलवेज in March 2001 for loss of goods of rupees 2 lakh had been passed for payment in March 2003 for 1,50,000 had been passed for payment. Okay, had been passed. जो claim हमने किया था 2001 में for 2 lakh वो पास हो चुका है, मतलब अप्रूव हो चुका है 2003 में, मार्च 2003 में. कितने के लिए? करेक्ट, 1,50,000 के लिए. नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी व्हेन द क्लेम वॉज लॉन्च्ड. जब क्लेम किया था रेलवेज को तब हमने बुक्स में कौन सी भी एंट्री नहीं की थी. एडवाइस पी कंपनी लिमिटेड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स for the year ended 31st March 2003. So AS9 on revenue recognition states that where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty, wordings देखो, is lacking at the time of raising any claim, revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved. फिर when recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainties, it is considered as revenue of the period. किस period का? In which it is certain to be collected. सो पोस्टपोन करना है रेवेन्यू एंड देन वो रेवेन्यू कौन से पीरियड का ट्रीट करना है? करेक्ट, जिस पीरियड में इट इज सर्टन टू कलेक्ट द अमाउंट. इन दिस केस इट मे बी एज्यूम दैट collectability of claim was not certain in the earlier periods. This is supposed from the fact that only 1,50,000 were collected against the claim of 2 lakh. So this transaction cannot be taken as prior period item. So prior period item AS5 में हमें देखना है. prior period item वो item होता है कि errors हुए हैं previous years में और उसका rectification हम current year में कर रहे हैं. ओके, तो इट इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम. सो उन्होंने जब क्लेम किया था तब उन्होंने एंट्री पास नहीं की थी बुक्स में, तो वो एरर ऑफ ओमिशन हम ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि उसका अल्टीमेट कलेक्शन जो है वो सर्टन नहीं था. हेंस रिसीट ऑफ 1,50,000 shall be recognized as revenue in the year ended 31st March 2003. जब वो पास हो गया ना, ओके, क्लेम पास हो गया तब. सो इन द लाइट ऑफ AS5 हमारा हुआ नहीं है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. ओके, AS5 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बारे में दिया है, सो इट इज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. हाउएवर AS5 स्टेट्स दैट when items of income and expense within profit or loss from ordinary activities are of such size, nature or incidence that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period, the nature and amount of such items should be disclosed separately. Accordingly, the nature and amount of this item should be disclosed सेपरेटली. ओके, यहाँ पर AS5 बोलता है कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के ही इनकम एक्सपेंस है, बट उसका नेचर, साइज एंड इंसिडेंस का डिस्क्लोजर इज रिलेवेंट टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज फॉर दैट पीरियड. तो उस केस में वो क्या करना है, नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच अमाउंट शुड बी ऑफ सच आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली दिखाना है. Okay, should be disclosed separately. So there is accordingly the nature and amount of the item should be disclosed separately. Okay, so यहाँ पर AS के provisions तो खत्म हो गए हैं. अभी हम देखने वाले हैं yes case study based questions. Exercise में आ जाओ.
When should entity GH recognize revenue in its books? So GH manufactures and sells televisions. The televisions are shipped to the customer by C. In order to transfer risk related to the shipment of the televisions, GH also gets an insurance coverage of the goods while they are in transit from the factory to customer's location. So the insurance policy will reimburse GH for the value of the goods in the event of loss or damage arising any time up to these goods reaching customer's location. So the legal title passes when the goods arrive at the customer's premises 1 month later, तब लीगल टाइटल पास होता है. सो व्हेन शुड एंटिटी जीएच रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू? सो कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? करेक्ट, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जब ट्रांसफर होता है तब. ओके, सो कस्टमर के लोकेशन को जाने के बाद हम कर सकते हैं ना. जीएच लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर द सेल when the goods arrive at the customer's premises. GH has not transferred the television's significant risk and rewards of ownership to the customer when the goods depart from the factory. This is evidenced by the fact that any insurance proceeds received from the goods damage or destruction will be repaid to GH. इस फैक्ट से समझता है ना कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं. फर्दर द लीगल टाइटल डज नॉट पास until the goods arrive at the customer's premises. Further, the legal title does not pass until the goods arrive at the customer's premises. So, आपको कब रिकॉग्नाइज करना है? when the goods arrive at the कस्टमर्स प्रीमाइसेस. करेक्ट. लिखो, पॉज करो वीडियो को और ये आंसर देख के लिखो. आप जब लिखोगे ना तब आपको ये लैंग्वेज आ जाएगी. बहुत सारे क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द अकाउंटेंट ओके ऑफ मेघना लिमिटेड विथ वैलिड रीजंस के साथ एडवाइस देना है दैट अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन अबाउ केसेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS 9. So the following information of Meghna Limited is provided. First is goods of rupees 60,000 were sold on 20 March 2002, but at the request of the buyer, these were delivered on 10th April 2002. So first केस का आंसर क्या होगा? हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? यस, क्योंकि डिलीवरी डिले की है एट द बायर्स रिक्वेस्ट. सो एज पर AS 9 revenue recognition in transaction involving the sale of goods, performance should be regarded as being achieved when the following conditions are fulfilled. The seller of goods has transferred to the buyer the property in the goods for a price, or all significant risk and rewards of ownership have been transferred to the buyer and the seller retains no effective control of goods transferred to a degree usually associated with the ownership, and no significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration that will be derived from the sale of the goods. Okay, so ये लिखना पड़ता है तो ये लर्न करो. लर्न. तो फर्स्ट केस में द सेलर इज कंप्लीट but the delivery has been postponed at a buyer's request. The entity should recognize the entire sale of 60,000 for the year ended 31st March 2002.
नेक्स्ट देखो, on 15 Jan 2002, goods of 1,50,000 were sent on consignment basis, of which 20% of the goods unsold are lying with the consignee. consignee के पास ही है वो on 31st March 2002. तो हम कितना रिकॉर्ड करेंगे? करेक्ट, 80% ही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी का इन्वेंट्री हुआ. So 20% goods lying unsold with the consignee should be treated as closing inventory, and sales should be recognized for 1,20,000, okay, which is 80% of 1,50,000. In case of consignment sale, revenue should not be recognized until the goods are sold to the third party. Okay, थर्ड क्या है उसमें? 1,20,000 worth of goods were sold on approval basis on 1st December 2001. The period of approval was 3 months, after which they were considered as sold. Buyer sent approval for 75% goods up to 31st Jan 2002 and no approval or disapproval received from the remaining goods. ओके, सो बायर ने अप्रूवल सेंड किया है फॉर कितने? फॉर 75% गुड्स अप टू 31st January 2002 एंड नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिसीव्ड फॉर द रिमेनिंग गुड्स अंटिल 31st March 2002. ओके, सो 3 months यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं. देखो, सो 31st March तक कुछ नहीं आया तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे? सेल ट्रीट कर सकते, क्योंकि 1st December को ही दिया था ना. सो 1st December से आगे 1st March तक 3 months कंप्लीट हो रहे हैं. सो 75% के जो गुड्स है जिसका अप्रूवल आया है वो हम 31st Jan को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड बाकी का 1st March को रिकॉर्ड करेंगे 25%. Okay, in case of goods sold on approval basis, revenue should not be recognized until the goods have been formally accepted by the buyer or the buyer has done an act adopting the transaction or the time period for rejection has elapsed or where no time has been fixed, a reasonable time has elapsed. So therefore revenue should be recognized. Therefore revenue should be recognized for rupees 90,000 upon the receipt of approval on 31st Jan. करो यहाँ पर on 31st Jan 2002 and for the balance 30,000 on 1st March 2002 करो यहाँ पर, as the time period for rejecting the goods had expired. फर्स्ट मार्च को वो टाइम पीरियड खत्म हो गया. ओके, 1st December को ही हमने सेंड किए थे ना गुड्स, सो 1st December टू 1st March हो गए 3 months. And apart from the above, the company has made cash sales of 7,80,000 gross and trade discount of 5% was allowed on cash sales. So trade discount हम माइनस करके नेट अमाउंट से एंट्री करते हैं ना. So trade discount given should be deducted, ये लिखो, should be deducted in determining revenue. So thus 39,000 should be deducted from the amount of turnover of 7,80,000 for the purpose of recognition of revenue. So revenue should be 7,41,000. ओके, पॉज करो वीडियो को, लिखो आंसर को पहले.
Now 8. For the year ended 31st March 2001, KY Enterprises has entered into following transactions. On 31st March 2001, KY supplied 2 machines to its customer ST. Both machines were accepted by ST on 31st March 2001. Okay. Machine 1 was a machine that was routinely supplied by KY to many customers, and the installation process was very simple. Machine 1 was installed on 2nd April 2001 by ST employees. Machine 2, being more specialized in nature, requires installation process which is more complicated, requiring significant assistance from KY. So machine 2 was installed between 2nd and 5th April, and details of cost and sale prices are as follows. So machine 1 2 sale price, cost of production, उसके बाद installation fee नील है यहाँ पर, and यहाँ पर 10,000. So how should above transactions be recognized by KY Enterprises for the year ended 31st March? So मुझे लगता है कि दोनों मशीन्स का सेल हो चुका है क्योंकि एक्सेप्ट किया है ना ST ने ऑन 31st मार्च. ओके, एंड फर्स्ट इसमें तो इंस्टॉलेशन भी इजी है, ST के एम्प्लॉयज ने ही किया है वो 2nd अप्रैल को, तो हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, सेल ट्रीट कर सकते हैं, एंड सेकेंड को भी सेल ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि ST ने एक्सेप्ट किया हुआ है कस्टमर ने. सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा 5th अप्रैल तक. So as the installation process is simple. यहाँ पर क्या लिखना है देखो, as the installation process is simple, revenue from machine 1 will be recognized on 31st March. Revenue 3,20,000, cost of goods sold 1,60,000 and profit 1,60,000. ठीक है. अभी since the question specifies that the machine is already accepted by ST on 31st March, the revenue arising from sale of machine needs to be recognized for the year ending 31st March. This is because acceptance of the machine indicates that risk and rewards pursuant to the ownership are transferred to ST. And second case में installation for machine 2 is more complicated, requiring significant assistance from KY Limited. However, question specifies that the machine is already accepted by ST on 31st March, assuming that there is no further approval or acceptance required from the buyer for the machine sold. Revenue from sale of machine 2 can be recognized for the year ending 31st March 2001. So revenue यहाँ पर 3 लाख है, cost of goods sold 1,50,000, profit भी 1,50,000. However, installation fee which is for rendering installation services cannot be recognized until the installation is complete. Since the machine is pending installation, the revenue in respect of installation charges, which is 10,000, need to be recognized on 5th April. Once the installation process gets completed. ठीक है. सो इसका इंस्टॉलेशन हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, 5th अप्रैल को इंस्टॉलेशन चार्जेस. बट सेल्स हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, यस. सो सेल आप रिकॉर्ड कर सकते हो.
Okay, and now last one. During the year 2001-2, the company wants to recognize the entire interest receivable. Do you agree? So PQR Limited sells agricultural products to dealers. One of the condition of the sale is that interest is at the rate of 2% per month for delayed payments. So percentage of interest recovery is only 10% on such overdue outstanding due to various reasons. Okay, so इस इनका condition क्या है? One of the condition of sale is that interest लगता है कितना? At the rate of 2% per month, हाँ, for delayed payments, and percentage of interest recovery is 10% only on such overdue outstanding due to various reasons. So हम पूरा रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि there is no reasonable certainty as to collection. So as per AS9 revenue recognition, where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim for escalation of price, export incentives, interest, etc., revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved. In such cases, it may be appropriate to recognize revenue only when it is reasonably certain that the ultimate collection will be made. Where there is no uncertainty as to ultimate collection, revenue is recognized at the time of sale or rendering of services, even though payments are made by installments. So thus PQR Limited cannot recognize the interest amount unless the company actually receives it, and 10% rate of recovery on overdue outstanding is also an estimate ही है ये भी based on the previous records and is not certain कि 10% भी आएंगे क्या, certain नहीं है, वो सिर्फ estimation है. Hence the company is advised to recognize interest receivable only on receipt basis. Okay, so ये advice रहेगा. तो हम पूरा इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. सो ये स्टैंडर्ड खत्म हुआ है. आंसर्स इसके सारे थेरी ही है, पूरा स्टैंडर्ड थेरी है. तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, करेक्ट. जितनी आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतनी सेम लैंग्वेज आपकी आंसर में आ जाएगी. ओके ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. बाय बाय.